health, happiness, spirituality, abundance, and prosperity. Thank you. Take a long deep breath. Hold your breath and exhale. Let me start the recording. Okay, recording is on already. So thank you everyone for joining in time. Some people will join, I guess कुछ लोग join करेंगे after some time, but we will start. So today's topic, हम लोग आज बात करेंगे दो चीजों के बारे में, एक ही चीज के बारे में mainly, that is pride, and what happens when we have pride, how to identify pride कि हमें pride है. So थोड़ा talk part आज थोड़ा लंबा रहेगा, maybe half an hour we'll discuss about pride. Half an hour is not enough, honestly speaking, but we'll see whatever we can talk about. Then how it affects negatively to our life. And then we'll talk about how to identify and what is the remedy also to a certain extent. Okay, so we'll discuss little bit of everything. Okay, little bit of everything. So what is pride? The definitions of pride is कुछ ऐसा होता है कि pride एक ऐसी एनर्जी है जो हमें अपने अंदर की कमियां नहीं देखने देता है. ओके, एंड दिस लव एक ऐसी एनर्जी है, यानी प्यार एक ऐसी एनर्जी है जो हमें दूसरे इंसान के अंदर कमियां नहीं देखने देता है. प्राइड क्या करता है? हमें खुद के अंदर की जो कमियां है, वीकनेसेस है, वो हमें देखने नहीं देता. इट मेक्स अस ब्लाइंड, वी कांट सी आवर वीकनेसेस. And love is the energy which does not allow us to see mistakes or weaknesses in other person. Like जब हम किसी से प्यार करते हैं, when we love somebody, we like everything about that person. Everything. सब कुछ पसंद आता है. We can't see weaknesses और खामियां नजर नहीं आती है. सॉरी, मैं हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ तो मेरे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ा जाएंगे, बट आई अपोलोजाइज इन एडवांस, बट आई एम बीइंग टोल्ड बाय लीना दैट इट हैज टू बी इन हिंदी. ओके, तो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स बात करूंगा. सो प्राइड क्यों आता है हमें? ओके, प्राइड हर इंसान में होता है कि किन लोगों में होता है, विल डिस्कस दैट एज वेल. सो प्राइड एक ऐसी एनर्जी जो सब में है, एवरीबडी, नोबडी इज एग्जेम्पशन टू प्राइड. विदाउट प्राइड वी कैन नॉट एग्जिस्ट. जिनमें प्राइड नहीं होता है, दे कांट लिव. इफ यू हैव जीरो प्राइड यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू लिव. ओके, सो प्राइड इज नेसेसरी टू लिव. सो प्राइड है, सब में है, हमें. ऐसा भी कहा जाता है कि आध्यात्म में, ऑन स्पिरिचुअल पाथ, प्राइड इज द लास्ट थिंग टू गो. प्राइड एक ये ऐसी चीज है जो आखिरी चीज है जो अंत में जाएगी. यानी हम स्पिरिचुअल पाथ में जब अंत में होंगे, इस रास्ते पर एंड में हमारे डेस्टिनेशन के पास पहुंचेंगे, तब तक प्राइड रहेगा. सो प्राइड हमेशा रहेगा. ओके, नाउ बट कितने क्वांटिटी में रहेगा, दैट हैज टू चेंज. ओके, सो प्राइड सब में है, बट हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइड एंड प्राइड हमें कैसे सफरिंग देता है, दैट विल डिस्कस. सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव प्राइड? व्हेन वी हैव प्राइड, इट ब्लॉक्स आवर प्रोग्रेस समटाइम्स. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज जब प्राइड आता है ना, तो वी कांट लर्न मोर. ओके, देयर इज नो ह्यूमिलिटी टू लर्न मोर इन दैट एरिया. जिस भी चीज का प्राइड हमें आ जाता है, तो वहां हम लर्निंग का स्कोप खो जाते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस एक्सेसिव जब होता है? सो इमेजिन you are alive because of the pride, right? But you come in the world, in this world, on this earth, we incarnate, we came to life because we want to learn something. So pride hinders भी है learning में. But अगर जाना है मुझे वहां तक, तो प्राइड चाहिए भी. ओके, मतलब जिंदा रहना है, मुझे अलाइव रहना है, तो प्राइड चाहिए भी. सो दोनों चीजें हैंड इन हैंड है. सो व्हाट हैपन, एवरी टाइम यू वांट टू लर्न समथिंग, तो प्राइड इतना होना चाहिए कि हम सीख सके, हमें वो सीखने में रोड ब्लॉक ना बने. एज यू लर्न मोर, आपके अंदर का प्राइड कम होते जाता है. और समटाइम्स प्राइड बिकम्स हिंड्रेंस इन लर्निंग. सो जब भी हमें लगता है कि हम सीख नहीं पाएंगे, और हमारे लाइफ में रोड ब्लॉक आने लगता है, इट्स बिकॉज रोड ब्लॉक इन द सेंस लर्निंग में, इट्स बिकॉज ऑफ द प्राइड. इट्स ऑलवेज बिकॉज ऑफ द प्राइड. एंड देयर आर 4 sins they say. One sin, मतलब on spiritual path when people progress, they fall because of 4 sins. One of the sin is pride. Okay, प्राइड की वजह से. नाउ सो प्राइड के होने से क्या होता है? नंबर 1, कई सारी चीजें हमें मिलती नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज मिलने से अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा प्राइड बढ़ता है, और उस वजह से अगर हमें इस जीवन में जो सीखना है हम सीख नहीं पाएंगे, तो हमें वो चीज नहीं मिलेगी. आपका कर्मा होगा, सब कुछ होगा, बट वो चीज नहीं मिलेगी.
फॉर एग्जाम्पल आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, एग्जाम्पल आप बिलियनर बनना चाहते हो, बट अगर वो मिलने के बाद आपके अंदर इतना प्राइड बढ़ेगा कि आपने इस जीवन के लिए जो प्लान किया है कि मुझे ये सारी चीजें सीखनी है, बिफोर यू केम इनटू लाइफ, आपके आत्मा ने जो प्लान किया है वो अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ दैट प्राइड, तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी, आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे, दैट यू विल बी ऑलवेज स्टॉप्ड फ्रॉम इट, बिकॉज वो हिंड्रेंस बनेगा बाद में मेरे प्लान में, क्या कहेंगे, इट विल क्रिएट ऑब्स्टेकल, तो वो चीज मिलेगी नहीं। सो प्राइड स्टॉप्स अस फ्रॉम प्रोग्रेस। कई बार हमें जो चीजें चाहिए वो चीजें मिलती नहीं बिकॉज वी हैव प्राइड। Okay, and I've experienced it myself, and I'm sure if you identify those of you have done pranic, and you can scan, okay, मुझे एक पर्टिकुलर चीज चाहिए बट वो मुझे मिल नहीं रही है, और आई एम ट्राइंग हार्ड बट वो चीज हो नहीं रही है, देन चेक, अगर वो चीज हो जाती है तो हाउ मच इज देयर प्राइड इन मी, यू कैन स्कैन द एनर्जी ऑफ प्राइड। इफ यू फाइंड इट इज टू मच, मे बी दैट इज द रोड ब्लॉक, नाउ you have to remove this energy. Okay, how to remove it? So there are some techniques which you can practice at your own. Those who have done Hatha yoga, you can do certain technique like BT, etc. And if not, maybe you can try surrendering yourself and few more techniques that we'll discuss. So pride is a roadblock. Pride is a big challenge in the progress of a human life, or actually the progress of the soul. Okay, so pride आना नहीं चाहिए हमें किसी भी चीज का, ना pride आता है तब हमें कैसे पता चलेगा कि मुझ में pride आया है। ओके, सो हमारे थॉट से एक्शंस में ऐसे होना रहता है कि वी स्टार्ट थिंकिंग कि आई एम सुपेरियर देन अदर पीपल, आई एम बेटर देन अदर पीपल, दैट इज अ साइन ऑफ प्राइड, राइट। हमारा फीडबैक के प्रति रेजिस्टेंस होता है, अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करता है ना, तो जरा सा भी, या हमारी कमियां किसी के सामने दिखाई दी, या किसी ने किसी के सामने हमारे कमियों के बारे में बात की, हमारा मजाक भी उड़ाया हल्का सा, है ना, जोक में भी हुआ, पीपल डोंट लाइक इट, ऑफेंड हो जाएंगे, इट मीन्स देयर इज अ प्राइड, राइट। हम लोग फ्रिक्वेंटली कंपेयर करें खुद के साथ, अरे आई एम बेटर देन दैट, आई एम बेटर देन दिस पर्सन, मुझ मेरे पास ये बेटर है उस इंसान के पास है उससे, एंड सो ऑन, इट मीन्स देयर इज अ प्राइड। या कई बार डिस्कशंस में आप बैठे हो एंड यू गिव टू मच सेल्फ इंपॉर्टेंस, ओके, कि या फिर मेरे ओपिनियन आर बेस्ट ओपिनियन, मेरे अचीवमेंट्स आर द बेस्ट अचीवमेंट, ओके, आई एम मोर सिग्निफिकेंट देन अदर पीपल, ये जब थॉट आता है ना, इट मीन्स देयर इज अ प्राइड, द एटीट्यूड हैज प्राइड। Now, apart from that, pride can reflect in behavior also. अब ये चीजें आप लिख सकते हो, बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि हम में प्राइड है या नहीं है, आप सोच पाएंगे, देख पाएंगे। सो स्पीच या बिहेवियर में कैसे आता है कि पर्सन में बी वेरी डोमिनेटिंग, जब भी कन्वर्सेशन होते तो वेरी मच डोमिनेटिंग, इंटरप्टिंग अदर पीपल, दूसरों के ओपिनियन डिसमिस कर देना, दैट इज साइन ऑफ प्राइड। या सीकिंग फॉर रिकॉग्निशन, कि मुझे अक्नॉलेजमेंट मिले, मुझे अगर मुझे मेरे एफर्ट्स एक्नॉलेज नहीं किए गए तो आई फील अपसेट, मुझे प्रेज नहीं किया गया तो आई फील अपसेट, दैट इज साइन ऑफ प्राइड। अपोलॉजी कर यू नो अपोलोजाइज करने में डिफिकल्टी होती है, माफी नहीं मांग सकते ऐसे लोग जिन्हें प्राइड होता है, बिकॉज प्राइड विल नॉट अलाउ यू टू सी कि मेरी मिस्टेक ही नहीं है, व्हाई शुड आई अपोलोजाइज, राइट। प्राइड रहना तो आप मदद भी नहीं मांग पाओगे, ओके। किसी और पे डिपेंडेंस को वीकनेस की तरह देखते हैं हम खुद के, कि मेरे अंदर आई एम डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, मतलब मुझ में वीकनेस है। सो हेल्प मांगना से अगर आप कतराते हो, देयर इज अ प्राइड, लाइक जैसे कि व्हेन यू डोनेट, व्हेन यू डू चैरिटी, दैट इंक्रीजेस प्राइड, बिकॉज आप दे रहे हो, मांगने वाले का प्राइड टूटता है, द पर्सन हु इज आस्किंग फॉर हेल्प, द प्राइड इज ब्रेकिंग, ह्यूमिलिटी इज डेवलपिंग, द पर्सन हु इज गिविंग, प्राइड इज इंक्रीजिंग। नाउ as you become more generous, as your heart develops, you will give more, and that will generate more pride. It will happen. It eventual to happen. So giving generates good karma and pride both, unfortunately. Okay, so स्पिरिचुअल पाथ पे प्राइड कैसे आता है, तो बहुत रिजिड बिलीफ हो जाना कि नहीं, थिंग्स, चीजें ऐसी होती है, दिस इज हाउ इट इज, नो, दूसरा कोई पर्सपेक्टिव दिखाए तो वो देख नहीं पाना इज अ साइन ऑफ प्राइड। एंड समटाइम्स इट हैपेंस टू ऑल ऑफ अस, कि हमारे थॉट प्रोसेस स्पिरिचुअल चीजों को लेकर भी इतने बायस्ड हो जाते हैं कि नहीं, चीजें यही है, दिस इज व्हाट माय गुरु सेड, दिस इज द फाइनल ट्रूथ। बट इफ यू लुक एट मास्टर जोगक्सु, इवन ऑल हिज टीचिंग्स, आई विल शेयर वन इंसिडेंट विथ यू। वंस समबडी केम टू हिम एंड उनको बुक दिखाया उनका बेसिक का, which he took him by the way 30 years to write, 30 years of his research, life research, and around I guess 5-6 years he was writing that book.
He spent time with pen and paper on writing that book, 5 6 years, revisions etc, making sure is everything is accurate. वो होने के बाद उन्होंने बुक पब्लिश किया एंड कई साल बाद somebody came to him and said, मास्टर आपके बुक में ये मिस्टेक है, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, आपने जो लिखा है दिस इज रॉन्ग. सो यू नो व्हाट मास्टर सेड, या मे बी यू आर राइट. ही डिड नॉट से कि अरे मैंने 30 साल बिताए हैं स्टडी करके, 6 7 साल लगाए बुक लिखने में, तुम मुझे सिखाओगे कि सही क्या है गलत क्या है. He said maybe you are right and I accept it as long as it's your own opinion. मतलब अगर ये आपका खुद का ओपिनियन है, आपके खुद के डिसर्नमेंट से आया है, आपका पर्सपेक्टिव है, तो आई एक्सेप्ट इट, पॉसिबल है मे बी. बट इफ यू हियर समबडी एल्स, व्हाट डज इट मीन कि इफ आपने किसी और का पर्सपेक्टिव सुन के आए हो देन यू से इट इज रॉन्ग, मे बी इट इज नॉट रॉन्ग, राइट. इट्स नॉट योर ओन बिलीफ, योर ओन अंडरस्टैंडिंग और डिसर्नमेंट. सो वो हमेशा डिसर्नमेंट को वैल्यू देते थे बिकॉज दैट automatically gives person, makes people humble also, by the way. We'll talk about that now. ग्रैटिट्यूड जिन लोगों, जैसे रिजिड बिलीफ के बारे में बात आ गई, सो पर्सन शुड नॉट बी हैविंग रिजिड बिलीफ्स. वी शुड बी ऑलवेज ओपन टू द न्यू आइडियाज, पर्सपेक्टिव सुन लीजिए, देख लीजिए, मे बी इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट ट्रू, और मे बी इट इज नॉट एज राइट जैसा आपका पर्सपेक्टिव है, बट फिर भी इफ यू आर नॉट ओपन टू व्यू इट पर्सपेक्टिव, वो पर्सपेक्टिव देखने के लिए हम रेडी नहीं है, इट मीन्स देयर इज अ प्राइड. और लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, समटाइम्स हम फील करते हैं कि ग्रेटिट्यूड नहीं होना. ग्रेटिट्यूड जब नहीं होता तो क्या होता है, वी आर नॉट थैंकफुल, वी आर नॉट, सो सडनली वी स्टार्ट फीलिंग कि आई एम एंटाइटल्ड टू इट, व्हाई शुड आई बी ग्रेटफुल फॉर इट. लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब देयर इज अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, आई एम एंटाइटल्ड टू दिस, आई एम नॉट रिसीविंग दिस, आई एम नॉट थैंकफुल फॉर इट, nobody is helping me, nobody is giving me, I am entitled for it. So it's for example, if somebody says namaste to you or good morning to you, you should be grateful that people are greeting you good morning, right? But if you say no, I'm entitled, I'm boss, people say me good morning, that's how it is, it should be, then there is a lack of gratitude, it's a sense of pride, right? दूसरों के स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को जज करना is also pride, spiritual sense में. Like for example, I am more spiritually advanced than others, I have more higher level than others, this is sign of pride, right? सो ऑल दिस वेज हेल्प अस आइडेंटिफाई कि हम में प्राइड कहाँ पर, अगर ये चीजें हो रही है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स, बट दिस थिंग्स आर हैपनिंग, लुक एट, आर दिस थिंग्स हैपनिंग. अगर ये चीजें हो रही है, मे बी देयर इज अ प्राइड एंड वी नीड टू रिमूव दैट. राइट नाउ, हाउ टू, आई एम जस्ट चेकिंग टाइम, 47. ओके नाउ, सो अब प्राइड है, अगर ये सबसे होता क्या है, नंबर वन, वी स्टॉप लर्निंग मोर. हमारा देखने का, सीखने का जो हमारा जो प्रोग्रेस है, दैट स्टॉप्स. द होल पर्पस वी कम हियर, समवेयर वो रुक जाता है. मतलब हम चार चीजों के साथ प्राइड नहीं है. जैसे हम दुनिया में आए टू लर्न, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, देयर आर 7 8 सब्जेक्ट्स. हमें अगर एक का प्राइड है ना, तो उस सब्जेक्ट में हम ज्यादा कुछ सीख नहीं पाएंगे, बाकी में सीखेंगे हम. सो नॉट एवरीबडी हैज प्राइड ऑफ एवरीथिंग. कुछ चीजों का प्राइड होता है हमें, कुछ चीजों में नहीं होता है, या उतना नहीं है जितना हमें अभी भी, शायद और थोड़ा सीखने के बाद प्राइड आ जाएगा. राइट. सो अभी कुछ चीजों में है जहां हमारा ग्रोथ रुका हुआ है, कुछ चीजों में नहीं है, सो वी आर ग्रोइंग. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कहाँ हम ग्रो नहीं हो रहे हैं, टू वी हैव प्राइड कनेक्टेड विथ इट. एंड इफ यू आइडेंटिफाई एंड रिमूव, यू विल प्रोग्रेस, यू विल सी कि रास्ता आगे दिख रहा है. आप मेहनत कर रहे हो. सी समटाइम्स देयर आर टू थिंग्स हमेशा कि जिसकी वजह से हमें चीजें मिलती है. एक होता है कर्मा, लाइक देयर इज अ कर्मा एंड दैट्स व्हाई वी कैन अचीव इट. सेकंड थिंग, आपका डेस्टिनी, आपका प्लान है लाइफ में, आपको ये चीजें मिलने वाली इस लाइफ टाइम में. थर्ड होता है आपका पुरुषार्थ, या योर फ्री विल दैट यू आर यूजिंग इट. अगर ये तीनों चीजों भी है, बट अगर प्राइड है तो चीजें नहीं होगी. सो कैन यू इमेजिन हाउ problematic pride can be. So try to look at those things where you are stuck. Okay, zero pride नहीं हो पाएगा, and will not survive otherwise. Pride, मास्टर जॉगॉग से कहते हैं कि pride is like प्लास्टर लगाते हैं हम लोग, या क्रच, उसकी तरह है. तो प्राइड हमें हेल्प करता है. यू नो जस्ट अ मिनट. सो
प्राइड इज लाइक अ प्लास्टर और अ क्रच की तरह मानते। क्रच मतलब जो चलने के लिए लाठी यूज करते, या एनी हेल्प विच हेल्प यू वॉक व्हेन यू हैव इंजुरी इन योर लेग, या कुछ तकलीफ है, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो मास्टर कहते हैं कि प्राइड क्रच की तरह या प्लास्टर की तरह होता है। जब आप ब्रोकन हो, जब आप टूटे हुए हो, तब वो आपको हेल्प करता है चलने में, राइट। जैसे किसी का पैर टूटा हुआ है तो दैट प्लास्टर और दैट क्रच विल हेल्प द पर्सन वॉक। बट जब पैर ठीक हो जाता है ना, तब वो प्राइड छोड़ देना चाहिए, क्रच छोड़ना जरूरी है। अदरवाइज वही जहां आप दौड़ सकते हो वहां पे आपको चलने लगाएगा। सो वेयर यू आर नॉट एबल टू वॉक, प्राइड विल हेल्प यू वॉक। बट वेयर यू कैन रन, pride will still make you walk only, not run. So pride is initially necessary energy when you are kind of broken, but later on pride has to go. Once you have developed that strength, learned how to walk, then बच्चा छोटा होता है initially. I don't know nowadays, तो आजकल walkers आते हैं, different walkers. Earlier there used to be walkers. The kid would take help of that walker and walk, right? So pride is like that. Initially it helps. But after once you start walking, if you still walk with that, then you're stuck now with that pride. You'll not be able to do many things. You'll not be able to take advantage of walking, advantage of your legs to the 100% of the capacity. So many people, because of pride, they are not able to take advantage of their kindness because they have pride. They are not able to fully express their intelligence because they have pride. They are not able to yet understand the power they have because of the pride. Because of limited power make them feel proud that they can't achieve more power. Okay, so these are the problems. So uh, how to handle this, how to handle this, सेल्फ चेक कैसे करेंगे? सो यू कैन आस्क, ओके, क्या मैं नई चीजें या और सीखने के लिए ओपन हूं किसी एरिया में? इफ आई थिंक दैट आई हैव लर्नड एवरीथिंग, आई नो ऑलरेडी, देयर इज अ प्राइड, ओके। कैन आई एडमिट व्हेन आई एम रॉन्ग, और without feeling ashamed? Or sometimes there are something wrong about me, or sometimes certain things which are not so socially acceptable things about me which I am not sharing. Is it about pride? Sorry, am I able to do that? If not, there is a pride. uh, डू आई क्या मैं सच में लोगों को सुनता हूँ जब लोग कुछ कुछ बताते हैं मुझे? क्या मैं ऑलरेडी रिप्लाई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ माइंड में? जब मुझे कोई शेयर भी कर रहा है, मैंने पूरा बिना सुने मैं क्या रिप्लाई करूंगा उसके बारे में सोच रहा हूँ। आई एम नॉट लिसनिंग टू पीपल। इज अ प्राइड इन मी। Okay, do I celebrate other people's success without feeling like threatened or jealous? Then there is a pride. Sometimes people, they see कि other person is progressing, then I have to progress. Otherwise, I was okay. अच्छा, उसे मिला दिन मुझे चाहिए, अभी तक वो मेरे पास नहीं था, आई वॉज ओके, बट नाउ दूसरे के पास है, अब मुझे चाहिए, यू आई एम बेटर। दैट इज साइन ऑफ प्राइड। सो प्राइड बहुत सटल होता है, इट्स नॉट वेरी लाउड, इट इज वेरी सटली आपके पर्सनैलिटी का पार्ट बनता है। सो स्पेशली दोज हु आर ऑन स्पिरिचुअल पाथ, ओके, खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन, ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वन वे, इफ यू टॉक अबाउट, we take the time, yeah, we have 7 minutes. So if you look at the ways how we can check on pride, or maybe slowly हमें जो पता भी नहीं ऐसा pride निकलते जाए हमारे सिस्टम में से, so there are few practices. One, you can practice gratitude. Okay, every day when you go to bed, think about all the good things happen to you. Okay, acknowledge सारी चीजें. So gratitude मतलब it's not only about external things, about yourself also. उसे हम लोग कहते हैं good self esteem. Master Chokak says that, मास्टर सेज कि लो सेल्फ एस्टीम इज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्राइड। जिन लोगों में लो सेल्फ एस्टीम होता है वो इवेंचुअली प्राइड बन जाता है। सो मतलब मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, वो बहुत ज्यादा रिपीट जब करते, जब वो चीज मिल जाती है तो प्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो जो हमें अच्छा है, एक्नॉलेज, कि हाँ, मेरे में ये स्किल है, मेरे में कुछ स्किल नहीं है, मैंने ये अचीव किया है, मैंने कुछ चीज अचीव नहीं की है। ओके, मेरे पास कुछ चीजें अच्छी है, कुछ चीजें अच्छी नहीं है।
बट देन ऑल्सो बी ग्रेटफुल कि ये जो चीजें, जो स्किल्स मेरे पास है, जो अचीवमेंट मैंने हासिल की है, जो चीजें मेरे पास है, यू बी ग्रेटफुल टू समथिंग हायर सोर्स, इवन इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड, नो प्रॉब्लम, बट देर इज सम एनर्जी, देर इज डिविनिटी, you have mentors, you have parents, there's karma, good karma you have. Because of that, you are getting. You can say simply, okay, it's God's blessings. Of course, it's because of your effort about His blessing, but you just say God's blessings. Be grateful. So, you can do this exercise regularly, every day. Okay, gratitude practice makes you erase pride very subtly, very subtly. Okay, now another thing you can do is actively listen. Listen without interrupting, thinking about ways कि अब मैं इसके बाद मैं क्या बोलूंगा. Genuinely listen, then take time, then answer, or then say something. But when you are listening, just listen. Don't think कि उसने शुरू भी किया है, अभी 5 मिनट बात करेंगे, 1 मिनट के बाद या मुझे ये बोलना है. Don't come to that part. When that happens, उसके बाद का आप सुन ही नहीं रहे हो. Finish. The moment you have a thought, okay, he said that, now I will say this. तो उसके वो जैसे थॉट है मुझे ये बोलना है, उसके बाद का आप कुछ सुन ही नहीं रहे हो. You're done. Okay, so that then if you start actively listening, you are becoming humble. Listening is a sign of humility. So try in your आपका जो अगला कन्वर्सेशन होगा, डोंट प्लान कि मैं हमेशा ऐसे करूंगा. ओके, आज इस सेशन के बाद जो भी कन्वर्सेशन आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हो, कुछ भी हो, एक्टिवली लिसन. अब ज्यादा ध्यान दो समझने पर कि इंसान क्या बोलना चाहता है, रादर देन कि मुझे बोलना क्या है, मुझे क्या रिस्पॉन्स करना, उस पर ध्यान मत दीजिए. ना, जब भी कोई फीडबैक दे तो एक्सेप्ट इट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. ओके, रादर आस्क फॉर द फीडबैक, डोंट गेट डिफेंसिव. ओके, डिफेंसिव नहीं होना है कि नहीं मेरे, अरे नहीं नहीं, इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, या ओके थैंक यू सो मच, आई विल सी हाउ व्हाट आई कैन डू. एंड सी, एक्सेप्टिंग फीडबैक डज नॉट मीन कि आप गलत ही हो. आपने एक्सेप्ट किया मतलब यू थिंक अबाउट इट, यू विल एनालाइज इट. मे बी यू आर नॉट रॉन्ग, बट फीडबैक आए, सामने वाले का पर्सपेक्टिव हो सकता है. बट इमेजिन, लेट्स से आई गिव यू सम फीडबैक एंड यू से नो नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट, मैंने इस वजह से किया, उस वजह से किया. So what happens is, now I will not give you feedback again next time. So you lost the opportunity जहाँ आप improve हो सकते थे. Now, if I give you feedback and you listen, whether you accept it or not, do it or not, doesn't matter. But I felt respected कि okay, you heard, right? So I felt it is respected. So next time मेरे पास कुछ feedback रहेगा, I will give you. It doesn't matter कि आप उस पर action लेते हो या नहीं लेते हो, but you are open to listening to the feedback. I am happy. Same thing happened with me. If you give me some feedback, and I start giving judgment, I start giving answer, नहीं इसके वजह से, उसके वजह से, and so on. You will think, okay, next time it's better not to give feedback. So, but if I say, yeah, what you're saying is true, अगर मुझे already पता है, let's say you give feedback about, like later one of the classes, we got the feedback. We were looking at the feedbacks of the classes. So we were getting excellent for everything except food part was always good, good, good. So we started looking, okay, how can we improve the food? So we changed restaurants, did not work. Then we thought maybe we need something home cooked food. So then we look for family who is cooking and who are ready to give us properly packed meal, but home cooked. And then we did that and people started giving the feedback. So you need to put effort. अगर किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, so why they are not? They will not tell you. So feedback is important. You should have, this is about business or it's asana, you can send them message, etc. But what will you do in your life? You can send message to your friends, okay, I need feedback about me. Make a form कि आपको क्या answers पूछने चाहिए खुद के लिए, right? कि मैं what should I ask to improve myself? कैसे सवाल मैं frame करूँ? Depending upon area, friends है, colleague है, so on. Ask them genuine feedback. I want to improve. Can you help me? I think, you can start with this. I want to improve myself. I want to be a better person. And I think I think you can help me. So I want your genuine feedback, and this will not change anything between us. Whatever you say, ये हमारे बीच कुछ बदलेगा नहीं negatively. So mention negatively, nothing will change. But I will be grateful if you can share your opinion on certain things. Then you ask about कि जिस भी चीज के बारे में आपको feedback चाहिए. If it is colleague, maybe my professionalism is. Do you think I'm professional? Something like that. So you figure it out कि आप क्या पूछना चाहते हो. Let me know not what kind of answers you get, but how that exercise helped you. People will really surprise sometimes, by the way. Okay. Now, जब आप सर्विस करो, don't expect anything. जब आप, every time we expect something from
service activities, that's a problem. Like for example, when you go for, let's say you talk about Vinhars meditation to somebody, just talk about it. Don't expect कि उसके बाद उसने कुछ रिटर्न में कोर्स को साइन अप ही करना चाहिए, कहीं पे जाना ही चाहिए. Why? Let that person just hear it. Give without expectation. Okay. Serve is your service कहेंगे हम. You know, when you give whatever service you do, don't have that expectation attached to it. That helps with, it develops humility. Again, because it develops pride because you give, but when you do not expect anything, it develops a little bit of humility also. Okay. Always acknowledge other people's contribution. ये बहुत हेल्प करता है कि किसी ने बेफर्ट डाले, और when you realize after years, अरे नहीं उस व्यक्ति ने ना बहुत contribute किया. I did not acknowledge it properly maybe. So you acknowledge that. There's nothing wrong in acknowledging late whenever you realize. It happened with me also that some people I was not able to acknowledge their effort and their work, what they were doing, because I was busy in my what I was doing. I couldn't get time to see things, hear things, or pay attention. I was seeing the result, but I was not able to see the process. So then later on, when I realized, then I acknowledged. So acknowledgement helps. Acknowledge other people's contribution in your life, work, whatever it is. Now, uh, sometimes even one of the things which kills pride is once in a while you can do this, not regularly, but once in a while. Okay, this is the last thing maybe. Okay, last thing. For example, if you look at where we are right now, we are on this planet. Okay, or there are 8 billion people right now, and we are just one of them. If you zoom out, this giant earth, we are just not even a speck. इतने भी हमारा our existence नहीं है. If you look at that earth exists in a solar system which is even bigger. Now again zoom out. Okay, now this solar system is a part of a galaxy which is huge galaxy. Now if you look at that where we exist, our sun which is a biggest star, looks like a small speck. तो हमारा एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं. नाउ ये बहुत ज्यादा भी नहीं करना है फ्रीक्वेंटली, इससे न्यूनगंडता आ सकती है. यू मे फील टू स्मॉल अबाउट यू, बट सम वंस इन अ व्हाइल व्हेन यू फील प्राइड, maybe this will help where you are. Look in this entire universe where you are. Like there are many galaxies in a universe, and there are many universes in a max universe. If you look at from the perspective of max universe, we don't exist. It's like the air, you don't see anything there, but it exists. There is something, but you don't see it. Just like that, that is our existence. So master says, be like a hollow bamboo. Hollow bamboo क्या करता है? Stay empty so that divine energy can flow through you. Okay, stay empty so that divine energy can flow through you. This is important. So you can mentally say, I'm an instrument of divine. All goodness flows through me and not from me. The moment wo sense of instrument aata, even in the healing, master says, thank you for making me an instrument of healing. Doesn't say I am healer, but instrument of healing. So that energy will flow through you. Be like a hollow bamboo. Okay, empty bamboo. There is nothing inside, but just like water can flow through it, divine energy should be able to flow through you. And I guess we should stop here. It's 9:03 already. All right. So let's do some healing and see how we can maybe at least disintegrate pride to at least a little bit of it. Okay. Should we? Okay, great. So let's start. Raise your hands. Initially, so you raise your hand. When I say keep it down, then you can keep it down. हाथ raise करिए. Okay, now we'll be chanting Om. Think about everybody here. आप भी and everybody who is present. Sorry. So, just a minute. You. Okay. So let's start. Keep your hand like this. We'll be chanting Om. जब हम Om chant करेंगे, just be aware of each and every person's aura here.
their energy body, their physical body. Connect with each and every person. And let's purify, all of us together, purify each other's aura. Okay? Ready? Om. Be aware of emotions. Everybody be aware of your emotions and everybody else's emotions. Om. Be aware of the thoughts, everyone's thoughts. Om. Keep your hands down. Be aware of the energy coming down, entering your head area and spreading all over your body. Be aware of this light. Allow this light to disintegrate any kind of pride in your system. Om. The spiritual pride is you in you is being disintegrated. You are being blessed with humility. Mentally say, Lord God, thank you for blessing me with humility. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. With the blessings of God, with the blessings of Lord Maha Guruji Meli, Master Chokoksi, all the great ones, holy Gurus, holy Master Saints, Archangels, holy angels, and spiritual helpers, healing angels and healing ministers. May your entire being be healed of pride, physical pride, emotional pride, mental pride, spiritual pride is being disintegrated. Om Mani Padme Hum. Any pride of beauty or your looks is being disintegrated. Any pride connected with prosperity or money is being disintegrated. The excessive pride in your system connected with your intelligence is being disintegrated. Any pride connected with the sex is being disintegrated. Any pride connected with your kindness or generosity is being disintegrated. Any excessive pride connected with your mental development is being disintegrated. Any pride and excessive pride connected with your spiritual development is being disintegrated. Om Mani Padme Hum. Any kind of excessive pride beyond our comprehension, beyond our understanding, beyond our awareness is being disintegrated right now. Now. Om Mani Padme Hum. Om
Mentally say, Lord God, thank you for purifying my soul of these weaknesses. Thank you for purifying my existence, my personality of these weaknesses. Thank you for disintegrating pride from my system, especially excessive pride of any kind in my system. Lord God, thank you for blessing me with humility. Thank you for blessing me with gratefulness. Thank you for blessing me with ability to listen to others. Thank you for blessing me with ability to look at the feedbacks positively, constructively. Thank you for blessing me with good self-esteem. Thank you in full faith. Beware of your crown, beware of the top of the head. Visualize a star point of light on the top of your head. Just mentally chant Om as I chant Om. Still be aware. Just practice stillness for some time. Gently bring your awareness back into your body. अपने शरीर के प्रति सजग रहे. Raise your hands in blessing position. May each and every person be blessed with divine guidance, divine protection, and divine help. May each and every person in the world be blessed with harmony, with peace, with progress. May each and every person on earth be blessed with spirituality, with abundance and prosperity. May everybody be guided, mentored towards their spiritual growth. May they receive all the help they needed, physically, energetically, intellectually, to be on the spiritual path, to progress on spiritual path. Say, so be it. Tathastu. Let's bless our families, respective families, or everybody's family, friends, relatives, neighbors, colleagues. Bless all of them with good health, with happiness, with spirituality, with abundance and prosperity. Bless everybody with
inner peace and calmness. Bless everyone with humility. Blessings be to all. Allow yourself to be an instrument of God, instrument of divine energy to flow through you. We are all instrument of divine energy coming from the Supreme Being or Parabrahman. Let's say thank you to the Supreme Being, to all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, to my spiritual teacher, Master Jokoksi, Mahaguruji Meling. We thank you. Thank you for blessing us with humility. Thank you for blessing us with more opportunities to learn and grow. Thank you for blessing us with your kindness, with your mercy. Thank you for blessing us with good health, happiness, spirituality, abundance, and prosperity. Thank you and full faith. Thank you. Thank you everyone for joining.